Well, I guess we're live. Yes, we are. Hello, guys. So before we go any further, I want this is a statutory warning which I always give. Yes, we are. Hello, guys. Before we go, this is a stay at home, stay safe, be a good guy like this guy. यहाँ पे जो बंदा है उसी टाइप घर में रहना, stay safe. And while you're staying safe, crack IIT-JEE with India's largest platform, which is an academy, undoubtedly. All right, get the plus subscription using the code NSS1. ये कोड मत भूलना यार, ये बहुत मजेदार कोड है. 10% ऑफ मिलता है. यू गेट 10% ऑफ. इट्स लाइक सम सेल चलेगा. यूज दिस कोड. Use this code in the Unacademy platform to get the plus subscription and enjoy unlimited benefits. All right. Hello, amigos. I am N Srikanth. I did my BTech from IIT Kharagpur with an AIR of 385. I've been guiding you guys for the last 4 plus years. And yes, I'm a Sunrisers fan. And DC is equally marvelous, if not better. मैं डीसी का बड़ा फैन हूँ एंड आई नो डीसी इज लाइक गुड एट मेकिंग इंडिविजुअल हीरो मूवीज बट आई एम फैन ऑफ डीसी जोकर का बड़ा फैन. So this is Let's Crack JE channel for all you guys, especially in this quarantine time and especially when all the colleges are closed. Academy has done a very good job in helping you guys understand concepts better, and this is one of the initiatives. This is Let's Crack JE channel, and I am N Srikanth. I am teaching you here. So कुछ भी है, definitely don't forget to hit the like button and share this video everywhere. Subscribe to the channel so that we can spread smiles across and you can spread intelligence across the whole country. All right. Okay. So before we go further, let me tell you JE के लिए अभी 2.5 months बचा है. And उसके बाद there is a 4 exam format which is also starting off these days. Starting off this time. So before we go any further, I would like to suggest you guys a few tricks. Hello, Tushar Das. Hello, hi. So I would like to tell you a few tricks which will help you tackle the exam better. Okay. ये जो है मैं अपने खुद से experience से find out. I use this everywhere. I tell this to every student around. But all the fresh listeners who are out there, definitely follow this rule. Have one test every day. Have one test every day on each subject. This is a very useful method with which you can approach the exam. क्योंकि जब तुम टेस्ट लिखते जाओगे, या सिद्धार्थ, डेफिनेटली मार्वल तो मचा रहा है, आई नो. डोंट रब इट ऑन माय फेस, बट देन या, मार्वल इज डूइंग बेटर देन डीसी फॉर श्योर, बट आई एम ए डीसी फैन. ऑल राइट. ठीक है. So I'll suggest this one to everyone. One test every day on each subject for 1 hour. ये टेस्ट जो है, you can take any 30 or 20 questions, 20 to 30 questions for 1 hour. ये तुम टेस्ट टाइप लिख देना. देन एट द एंड ऑफ द क्विज यू कैन चेक योर आंसर्स एंड सी हाउ वेल यू परफॉर्म, एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड विच टॉपिक यू डूइंग वेल, विच टॉपिक यू नॉट डूइंग वेल. कौन सा टॉपिक एनालिसिस भी हो जाएगा, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड एग्जाम में कैसे टाइम वेस्ट होने वाला है. Because in the exam, most of you guys have this problem कि you get lost, you lose track of time, and then you get stuck in one problem. Having doing this every day will definitely make sure you don't lose time in the exam on stupid questions. Okay, because every day you keep doing the same test. Imagine it's like a test. Imagine it like you're writing JE every day. That way, it will help you. And I always say a quiz a day keeps you ready for JE any day. You ready for JE any day. So definitely ये कर देना तुम. Like I want you guys to do this. Not only this, Unacademy platform पे मैं quizzes दे रहा हूँ. Okay. I also have quiz on Unacademy platform. It is called a night out with Srikanth sir. Definitely come there. We'll have loads of fun with Srikanth sir. This is what is the name of the this thing on the Unacademy platform. It happens at 10:30 p.m. every day. So definitely come and have fun there. All right. So yes, before we go further,
Give me one minute, guys. All right, let's get to it. So this is solutions to Pathfinder and Irodov based on popular request. तुम लोग ही पूछ रहे थे कि solutions कर दो Irodov का Pathfinder का. Here we are. Today's topic I'm covering is Newton's laws of motion. Most of the questions will be Newton's laws of motion based questions. And this is one special thing. And this is the problems list we are having today. Irodov problems 1.62, 1.73, 1.77. आराम से हर दिन 25 problems है. I'm taking 5 of them. Yesterday I took from 50 till 50. Today I'm taking from 50 to 875 forward. Collective set of progressing problems. So we will slowly try to cover all the topics by the time JE starts. We'll have this problem every day. We'll have this set every day. So definitely stay tuned to it. Irodov and Pathfinder chapter 3 ke objective problem. All right. So these are the two things I'm going to do for you guys. Problems in physics, in general physics by Irodov, and Pathfinder by JE Advanced Physics. JE Advanced Olympiad. Now let's see. This is the first question, guys. Give me one moment. I'm actually putting the class for today. ये रात का class. We don't have the class today, guys, unfortunately. All right, now let's go for it. A small body was launched up an inclined plane set at an angle alpha 50 degree. Alpha में ही solve करते हैं. So one thing I'd like to tell you guys definitely all the time is कि जब भी तुम ये problems कर रहे हो तो it's always suggested that you solve it in terms of whenever you do these problems, I'd rather suggest you guys solve it in terms of variables ताकि लास्ट में एप्लीकेशन में इजी हो जाएगा. So definitely go for it in variables, all right? So next, a plane is set at an angle alpha is 15 degrees against the horizon. Some angle alpha, I will not put 50. Find the coefficient of friction if the time of ascent of the body is eta times less than the time of descent. Time of ascent and time of descent may the ratio of times is 2:1. Wow. So यहाँ पे ascent का let's start solving and here we will solve for descent. So let's take the total length to be L. Right, let's take the total length which is it's traveling to be L. L length मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे first ascent का free body diagram खींचना है. When the body is going upwards, when it's going upwards, friction will definitely act backwards. Also gravity will act backwards. तो एक बार free body diagram समझ में आ जाएगा. Okay, let's draw the free body diagram and then analyze the whole thing properly. All right. एकदम तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस है. एक है फ्रिक्शन which is equal to mu into n. Since the body is already moving, we will take friction to be mu into n. All right. And एक है ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पे ग्रेविटी का mg sin अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा और mg cos अल्फा तो डाउनवर्ड रहेगा and normal reaction will be formed. So from this, what are the equations we can derive from this particular thing? Normal reaction will be equal to mg cos alpha. All right.
and then we can say the net force on the x direction, net force along the incline. This is along the incline, this is perpendicular to the incline. This is perpendicular to incline wala equation. So it's always better to write it perpendicular to incline and normal to incline, because this way lot of other factors will get cancelled. Like acceleration in this particular direction, vertical in this direction will be zero always based on wedge constraint. Now, by wedge constraint का use से the acceleration in this direction will always be zero. Hence, we can equate both the up and down force. This is because net force will be equal to zero. ये बहुत बड़ा advantage है problem solving. So now along the incline, we'll write the equation. Along the inclined plane, we will get the net force will be equal to mg sine alpha plus mu into n, which is equal to mg sine alpha plus mu mg cos alpha. तो एकदम mg कॉमन ले लो, sin alpha plus mu cos alpha. So this is the net force acting along the incline. So during ascent, अब ये क्या आ गया? During ascent, the net acceleration of the body will be equal to F net by mass. तो बस इसमें mg already है, so we'll just remove of the mass there and we'll get the answer directly, which is equal to g into sin alpha plus cos alpha. So this is the acceleration up the incline. Now it has initial velocity v. So what can we say the total time? What is given in the question? The time is given, right? The time of ascent. Time of ascent will be equal to v by a. It's starting with, because it's starting with velocity v and finishing with velocity 0. And acceleration ये है, acceleration upward. तो इसका value क्या आ गया? Time of ascent is v by e into sin alpha plus, this is the first thing. Getting it? It is going down the it is going up the incline, initial velocity v. So length से भी solve कर सकते. Length से we can also write, we can also say time of ascent को ऐसे मत लिख. We'll write it in a little different way so that मतलब length use हो जाए. We can say ut plus half at square is equal to L, right? So in the same logic, we can also say V average will be initial velocity. So इसमें थोड़ा I'll cover all the topics which will be very useful to analyze. When a body is having constant acceleration, you can also say average velocity is V initial plus V final by 2. ठीक है, तो इसमें ये कितना हो गया? V initial तो V हो गया plus V final 0 by 2. So average velocity will be V by 2. ठीक है, this is one of the methods, one of the ways of looking at it. Average velocity will be V by 2. All right. तो ये एक तरीका है, कभी कभी यूज होगा, but we won't use this right now. We will directly go for this logic, saying total time of ascent in terms of total length. Total length will be it's going with velocity v, तो रुक जाएगा eventually at the end. We can say u into t plus half into a into t square equal to L. This is the first equation we will write. So इसमें, since we also know that the average velocity is half of it, we can also say a t square will be equal to 2L. ठीक है, because the total time of flight is equal to u by a. तो इससे मैं क्या लिख दूंगा? u is equal to at लिख दूंगा. So I can substitute this here. Then what will I get? u is equal to at into t, and since it's negative, we will write half at equal to L. इससे क्या आ जाएगा? at square is equal to 2L, or we will also get a simple equation saying time is equal to 2L by a. ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी यूज भी कर सकते हैं. वी ऑलरेडी यूज दिस. टाइम ऑफ फ्लाइट इज रूट 2h by g. We use this formula already. So this formula will be useful everywhere. Time of flight will be equal to root 2 times L by a1. इसको a1 मान लेते हैं because of ascent. Time of ascent. Now similarly we have to write for descent. During descent, one page guys.
नेक्स्ट, सेम इक्वेशन ड्यूरिंग डिसेंट क्या हो? ड्यूरिंग डिसेंट, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक बार खींचा जाए तो you understand. One thing, the body is coming down with velocity v. So the friction will act in the opposite direction, even in this direction. Okay, let's different colors so that friction mu n इस डायरेक्शन में रहेगा और mg sin alpha तो इसी डायरेक्शन में रहेगा. Similarly, there will be mg cos alpha in this direction. यार ये तो मतलब तुझे याद रखना है, when the angle is alpha, this will be sin alpha, this will be cos alpha. Best way to understand is, think alpha is 0, the body will have 0 acceleration along the incline, which means it should be sin alpha in this way. तो ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है. So this is the one method. Now we will equate perpendicular to the incline. Equate along normal direction, तो same आएगा. Normal direction will be equal to mg cos alpha. ये भी बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको याद रख सकते हैं. Along incline, let's start solving. Along incline, the net force will be equal to mg. Since the body is coming down again, the net force will be in the downward direction. So I'll write mg sin alpha minus mu into n, which is equal to mg sin alpha minus mu g. तो एफ नेट कितना हो गया? mg कॉमन ले लो, sin alpha माइनस म्यू, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है. तो एक्सेलरेशन while descending a2 will be equal to, simply divided by m, is equal to g into sin alpha minus. तो अब सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लेंगे. टाइम ऑफ डिसेंट इज t2, आई विल टेक, will be equal to root 2l by a2, which is given by root of 2l by g into sin alpha by g into sin alpha plus mu cos alpha. अब इन दोनों को अगर देखोगे तो you'll understand t2 is greater than t1 for sure. And from the question it was given, it is given that t2 is equal to eta times t1. So this is what we will equate in the next page. यार इतने पेज खत्म कर रहा हूँ. अच्छा, तो ये हुई ना बात, ऊपर चला गया. बढ़िया. हेलो सायरम गारू, हेलो, गुड इवनिंग अम्मा, गुड इवनिंग डैडी. ऑल राइट. So now let's start solving both of them together. T2 is equal to eta T1. We'll substitute this. Root 2L by E sin alpha minus mu cos alpha. अच्छी से लिख देते. Sin alpha minus mu cos alpha will be equal to eta times root over 2L by G into sin alpha plus mu cos alpha. Wow, everything else will get cancelled if you observe carefully. All of this and this will get cancelled. So now I'll do squaring and equating. Squaring on both sides and sending this to the other side and sending this to the other side. What will I get? Sin alpha plus mu cos alpha is equal to eta square times sin alpha minus mu cos alpha. इसको इस साइड भेज दो, उसको इस साइड भेज दो, कुछ तो कर दो. Cos mu common ले लो पहले. You have to find mu, right? So we'll take mu common. We are getting here cos alpha plus eta square cos alpha is equal to sin alpha common ले लो into eta square minus 1. हो गई बात. mu will be equal to sin alpha into eta square minus 1 by cos alpha into eta square plus 1. There you go guys, this is the answer right in front of you guys. एकदम simple सा beautiful सा answer आ गया. Eventually it is tan alpha into eta square minus 1 by eta square plus 1. Substitute the values. You can actually check the values and put tan 15 degrees into 2 square minus 1, which is 3 by 5.
और tan थीटा पर वेरी स्मॉल थीटा से अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो इससे क्या आ जाएगा 15/57 पॉइंट इज क्लोज टू 0.27. 0.27 into 3/5. This is close to 0. This is the approximate value. इसमें एक ट्रिक है जो मैं बता दूंगा अभी अगेन. For very small thetas, when theta is small, मतलब it is close to like 0.2, 0.3 and all. चलो इसको 0.3 कर लेते हैं so that just be more clear, simple. ठीक है. For very small angles, 0.2 radians, 0.3 radians तक भी चलेगा. Till here, you can simply write tan theta is equal to theta. खत्म हो गई. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. देयर यू गो. दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन गाइस. आई होप यू लाइक दैट. ये क्वेश्चन एकदम सुंदर है. आई लाइक राइटिंग द इक्वेशंस हियर, दैट्स व्हाई आई पुट दिस थिंग. आई वांट टू पुट दिस काइंड ऑफ इमेजेस just to look complicated. मतलब this question is very simple, it just looks complicated. बस तीन इक्वेशन लिखो, हो गई बात. Find the acceleration of bodies m1. You look into possible cases. Find the acceleration of the body m1. m1 का acceleration चाहिए. ठीक है, कर देते हैं. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर इन एच सी वर्मा एंड ऑल सच बुक्स. तो फॉर एवरीथिंग वी हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट. पहले इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे. यहाँ पे टेंशन टी में मान लो, यहाँ पे भी टेंशन टी होगा. सिंस द पुलिस आर मासलेस, द नेट फोर्स ऑन दिस शुड बी जीरो. तो यहाँ पे जो टेंशन है वो कितना रहेगा, ये आधा हो जाएगा. टेंशन हियर विल बी हाफ. दैट्स इनफ फॉर अस टू स्टार्ट ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम. एक यहाँ पे एम नॉट ब्लॉक का ले लो, का यहाँ पे बस टेंशन टी चल. एंड M1 ब्लॉक का क्या हो रहा है, M1 ब्लॉक का नीचे M1G फोर्स डाउनवर्ड है और टेंशन T/2 अपवर्ड है. सिमिलरली M2 इज ऑल्सो द सेम केस. M2 थोड़ा बड़ा दिख रहा है M1 से, तो M2 को बड़ा ले लेते हैं ऐसे ही. यहाँ पे T/2 है और इसका एक्सेलरेशन अगर A1 मान ली, द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज A0 ले लो. ठीक है, तो इसका द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी इज A0. उसका मतलब क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली will be equal to A0. So from this, what there is one very nice trick I want you guys to remember here, which is that acceleration of pulley will be equal to A1 plus A2 by 2. This is always the case, guys. This is always the case of string constraint. This can be realized from string constraint. समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सी बात है. ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आ रहा है. यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2. तो इसका A1 मान लो, इसका A2 मान लो. तो A1 प्लस A2 विल बी इक्वल टू A0. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन वी ऑल्सो हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. क्योंकि इसका अगर मान लो A1 नीचे ले लिए, इसका A2 नीचे ले लिए, तो A1 and A2 should have some relation, which is what we have here. So let's start solving everything. Tension is equal to m0 into a0. This is the first equation of Newton's laws. Newton's laws of motion equations we are writing. First equation, this is next equation is m1g minus t by 2 is equal to m1a. Similarly, m2g minus t by 2 is equal to m2a. a1 a1 m. हो गई बात. तो इसमें सिंपल हो जाएगा. यू हैव वन इक्वेशन, टू इक्वेशन एंड थ्री इक्वेशंस. तीन इक्वेशन हो गए. एक और रिलेशन है बिटवीन A1 एंड A2 एंड A0. द नेक्स्ट रिलेशन इज A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2A0 इज द फोर्थ रिलेशन विच वी ऑलरेडी डिराइव फ्रॉम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से ये रिलेशन आ गया. अब बस सबको सॉल्व करने हमें A1 निकालना है बस. बहुत लेंदी है ना. चलो आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है. हेलो तन्मय शर्मा, हाउ आर यू? वेलकम. तो यहाँ पे इरोडो का प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रहा है. तो विल जस्ट राइट ऑल द इक्वेशंस बगल में सो दैट वी कैन यूज देम एज रेफरेंस. टेंशन इज इक्वल टू m0 a0. m1g minus t by 2 is equal to m1 a1 and m2g minus t by 2 m2 a2. तो इन तीनों को ऐड कर दो पहले, कुछ भी हो जाएगा. कुछ विल गेट सम रिलेशन. विल गेट अ वेरी नाइस रिलेशन. m1g plus m2g is equal to m0 a0
plus m1 a1 plus m2 a2. This is a very nice relation. This is general net force acting is the sum of all accelerations वाला logic से ये काम ठीक है. One more thing, and we know a1 plus a2 is equal to a naught, 2 a naught from the string constraint. So I will directly depict a2 as a1. So I will directly write a2 is equal to 2 a naught minus a1 and substitute this 4 in 3. Using this 4 equation in 3, what is the equation I will get now? m2g minus t by 2 is equal to m2 into 2 a naught minus m2 a1. और इससे दूसरा इक्वेशन क्या है? m1g minus t by 2 is equal to m1 a1. बस ये दोनों से कुछ इक्वेशन हो सकता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक e1 a1 और a0 का रिलेशन आ जाएगा. दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एक और रिलेशन आ जाएगा, है ना. m2 minus m1 into g will become 2m2 a0 minus m1 plus m2 into a1. ये हो गया एक शानदार फिफ्थ इक्वेशन. और सिमिलरली वी हैव टू वेरिएबल्स हियर, ठीक है. वन इज a0, वन इज a1. Similarly, if we use 1 and 2 in the equations, we will get another simple this thing. Equation using 1 into, I will simply get m1g is equal to m1 a1 plus t by 2, which is also written as m0 a0 by 2. तो ये एक इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया एक m2 minus m1 into g is equal to 2m2 a0 minus m1 plus m2 into a1. वाह यार, बढ़िया इक्वेशन आ गया इन दोनों में. तो इसमें क्या करेंगे? हाउ डू वी गेट रिड ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स? सिंपल, इसको हम सीधा 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर. बढ़िया. So what do we get here after multiplying the equation 1 with 4? What do we get? The same equation again I will write, this time with a different color because it's the same equation. So I will get minus 4m1g is equal to minus 4m1a1 minus 2m0a2. अच्छा, ऐसा भी नहीं है, सीधा उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं हो जाएगा. तो हम विल डू वन सिंपल थिंग यार. सब ये सब -4 ये सब छोड़ दो. इसको हम यहाँ पे m2 है ना, तो यहाँ पे m2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4m2 और यहाँ पे m0 से मल्टीप्लाई. नाउ वी विल गेट डिफरेंट इक्वेशंस. इससे सिंपल हो जाएगा. 4m1 m2g इज इक्वल टू 4m1 m2a1 प्लस 2m0 m2a0. और दूसरे वाला का क्या हो गया? m0 इंटू m2 माइनस m1 इंटू g इज इक्वल टू 2m0 m2a0 माइनस m1 प्लस m2 इंटू a1. m0 भी है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? लेट्स डू वन थिंग, विल जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल बिकम प्लस, and this is finally getting cancelled. If you observe, this is a very simple calculation. Now what am I left with? 4m1 m2, ये माइनस को अंदर डाल देता हूँ, m1 माइनस m2 हो जाएगा, प्लस m0 इंटू m1 माइनस m2 इंटू g इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों सब ऐड हो जाएंगे. वाह रे वाह. 4m1 m2 इंटू a1 प्लस m1 प्लस m2 इंटू m0 इंटू a1. दिस इज द बंडा इक्वेशन. बहुत लंबा सा इक्वेशन आ गया, बट इसको सिंपली सॉल्व तो, लेकिन इवेंचुअली सॉल्व तो सिंपल हो गया ना. तो बस वैल्यू निकाल दो a1 का. व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू वी गेटिंग? a1 विल बी इक्वल टू, एक बार पीछे जाते हैं, 4m1 m2 प्लस m0 4m1 m2 इंटू g माइनस प्लस m0 इंटू m1 माइनस m2 इंटू g. ये g कॉमन ले लेते हैं,
plus m naught into m1 minus m2 by होल into g. यहाँ पे सब सेम है, बस एडिशन हो गया, बारे वाह. 4m1 m2 by m naught into m1. there you go guys. एकदम थोड़ा लंबा है पर है, पॉसिबल है, मुमकिन है. Yeah, we were asked to find exactly a1 and that is what we found out. It is acceleration exactly. What is asked here? Find the acceleration of body m1. Look into possible cases. तो इसमें क्या possible cases है, एक बार सोच लेते हैं. What possible cases are there if m1 is greater than m2, m1 is less than m2? ये वाला ये तो कुछ नहीं होगा यार. So that's all for this. I think it's a wonderful solution. Definitely ये solution अगर सच्चा लग रहा है, सच्चा और अच्छा लग रहा है, तो definitely like दबा देना for sure. All right. All right. Now let's go to the next problem. So this is a very nice one. This is a very classic problem of wedge constraint. ये एक wedge constraint का classic problem है. बहुत सारे लोग इसमें मतलब the this question will help you understand wedge constraint like no other problem. That is why I put this problem in front of you. Let's shoot right away. Find the acceleration of rod A and wedge B in the arrangement as shown in the figure. Okay. ये arrangement में we have to find out the acceleration of each of the rod and everything as shown. Okay, all right. So find the acceleration of rod A. The ratio of masses of wedge to the rod. Wedge has eta times the mass of rod. This is eta times m, and this is, these are two things which are given. Friction between all surfaces negligible. There is no friction anywhere whatsoever. Okay. So let's go for it. तो इसमें पहले हम नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा एक बार हम. So one thing there are few things I want you guys to understand, that the wedge A only moves downwards and B only moves horizontally. ठीक है. तो हम एक बार इसको सोच लेते हैं. This wedge is coming down with acceleration of a1 and this is going with an acceleration of a2, both of them along this direction. So the wedge constraint states that the component along this normal direction, wedge constraint states that along normal both will have same acceleration. Acceleration 1 will be same. तो इस डायरेक्शन में अगर सॉल्व करना है तो लेट्स ड्रॉ इट अ लिटिल मोर नीटली करके ड्रॉ कर दे. एक्सेलरेशन a1 डाउनवर्ड से, तो along the normal let's divide both of these acceleration. This is making an angle alpha. So ये एंगल अल्फा है, तो with the vertical ये एंगल अल्फा होगा. I drop it into two parts. This angle is alpha. ठीक है. This angle is alpha. Angle will be 90 minus alpha. This angle will also be 90 minus alpha, and hence this angle will be alpha. ठीक है. So the angle with the vertical for this normal reaction will be alpha. तो अब दोनों को लिख दो. एक a1 ऐसा है, एक a2 ऐसा है, and then there is angle with the vertical like this equal to alpha. ये alpha है तो ये भी alpha है, right? So the speed with which, and this will be 90 minus alpha. So इससे क्या आ जाएगा? From wedge constraint we can derive this equation saying that a1 into cos alpha should be equal to a2 into cos 90 minus, which is equal to sin alpha. So a1 cos alpha is equal to a2 sin alpha, or we can simply say a1 is equal to a2 into
tan alpha. This is the first relation we'll get, guys. That's it. A1 is A2 tan alpha. This is the first relation we got. Now let's draw equations for both of them. And the same normal reaction is acting on both of them. Now we have to draw free body diagram. Now one thing you can understand, for block A, only vertical direction is important. Because horizontally ये जो internal force है यहाँ के इसके अंदर जो भी forces है, these will make sure that Fx will be 0. Similarly, for this body, this normal reaction will make sure that Fy is equal to 0. So, for the wedge, we will only consider the horizontal movement. For block A, we will only consider vertical direction. Okay. तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस है जो वर्टिकल डायरेक्शन में इफेक्ट कर रहे हैं? दीज फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल. So the only force which is acting vertically is this. The normal reaction of interaction between both of them making an angle alpha with the horizontal. And there is also mg downwards. तो इन दोनों से क्या आ जाएगा? mg minus n cos alpha is equal to m into a1. ठीक है. So this is the first equation we got for the wedge. This is the wedge. This is the equation of the rod. For rod. Now for wedge, let's try the same equation for wedge. Wedge के लिए क्या होगा? If you observe, there is only one horizontal force here. There is only one horizontal force which makes angle alpha with the vertical. Everything else is normal force with the ground. Mg downwards, eta mg ले लो because it is eta mg. So the only horizontal force, only horizontal direction. Only horizontal direction. Because vertical direction will get balanced out. Na? Vertical direction is getting balanced out. Yeah, I know. I started Pathfinder also. You're welcome here. You guys only asked, so I thought I'll put it, and it was very nice. I enjoyed doing Pathfinder questions a lot. First half Irodov रहेगा, second half Pathfinder रहेगा. I removed Proto from the situation because बहुत लंबा है. Proto के questions बहुत लंबा हो रहे हैं. So I decided let's go for Pathfinder and Irodov. In horizontal direction. So this is one very nice technique I want you guys to understand कि wedge constraint में ये बस horizontally चल रहा है तो I write only horizontal. I won't write vertical equation. इसमें क्या आ जाएगा? n sin alpha is equal to mu eta n ना. Mass of this body is eta times mass of this. Eta m into 8. The second equation. This is the first equation. We also got the relation between the two as a1 is equal to a2 tan alpha. That is the third equation we're going to write. a1 is equal to a2 tan. Using these three equations, I can get the value. तो इसमें simple है. I'll substitute this in equation 1 or 2. चलो इसको किस में substitute करूँ? a1 में सीधा substitute कर दूंगा. Now I will write 3 in 1. 3 in 1. से क्या हो जाएगा? mg minus n cos alpha is equal to ma2 tan alpha. And n sin alpha is equal to eta m a2. तो इसको सिंपली tan alpha से मल्टीप्लाई कर लेंगे या इसको sin से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको cos से मल्टीप्लाई करेंगे. Either ways will work because this will ultimately get cancelled. So let's write both these equations once again. All right. So थोड़ा लंबा दिख रहा है but चलो we'll make it even simpler now. We'll just remove this. No, we will multiply this with cot alpha. Cot से काम चल जाएगा क्योंकि cot alpha से sin alpha हो जाएगा. तो सिंपल हो जाएगा अब इक्वेशन mg minus n cos alpha is equal to ma2 tan alpha. Similarly, n cos alpha will be equal to eta m a2 cot alpha. तो दोनों को ऐड कर दो, हो गया वंडरफुल आंसर. mg is equal to m कॉमन ले लो, a2 कॉमन ले लो, tan alpha plus mu eta cot alpha. मस्त हो गया ना, एकदम वंडरफुल सॉल्यूशन. तो इससे क्या आ गया? a2 will be equal to g by tan alpha plus eta cot alpha.
That's it, guys. Wonderful solution right in front of you. If you like it, don't forget to hit the like button, share it everywhere. पर ये है सिंपल, मतलब थोड़ा इधर उधर का इक्वेशन सॉल्विंग से हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर राइट अवे. ऑल राइट. तो इसमें पहले एक और बार फिर से लिख लेते हैं. A2, what is the value of A2 we got? A2 is equal to G by tan alpha plus the cot. And similarly A1 will be A2 tan alpha ना. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें हो गया G tan alpha plus the cot. हो गई बात. These are the two accelerations, guys. I hope you like this. You can also solve many more questions on this. We can also say time taken for the body to for the rod to come hit the ground. इस टाइप के बहुत सारे questions you can end up solving. All right. Now for the next question, a small sphere of mass m is suspended by a thread is first taken aside so the thread forms right angle with the vertical. मतलब starting कैसा है? The thread is formed horizontally. Initially the thread is made to have horizontal movement. This is the hinge point and it's horizontal. It has a mass of m. थ्रेड का लेंथ कुछ दिया है क्या? नथिंग. थ्रेड का लेंथ तो नहीं दिया यार. ये तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट देन दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. ठीक है. थ्रेड नहीं होगा, थ्रेड का लेंथ नहीं दिया. इवन देन इफ द आंसर्स आर बीइंग आस्क्ड, देन इट मींस दैट थ्रेड इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. गेटिंग इट? द थ्रेड इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. मैजिक है. लेंथ ऑफ थ्रेड डजंट मैटर. So let's find total acceleration of sphere and thread tension as a function of theta, the angle of deflection of thread from the vertical. तो यहाँ theta is the angle with the vertical. तो ये angle theta दिया हुआ. So this is the final state. Let's draw the final state in a little different. ये angle पे अभी thread पड़ा हुआ है. Let's take the length to be L, which will eventually get cancelled. I think that's what we realized already, that it will get cancelled. ये length L है तो ये length कितना होगा? The total fall it has is L cos theta. So from this we can always find out the velocity of this body, because tension is doing, work done by tension will be zero. So we can only use conservation of mechanical energy here. Conservation of mechanical energy, where kinetic energy here will be equal to loss in potential energy, which is equal to mgh. So directly we'll write off half mv square will be equal to m into g into L cos theta. So velocity सीधा आ जाएगा. ये तो you can also remember this value always. मतलब इस टाइप का वैल्यूज तुम मतलब काफी बार याद भी कर सकते हो. Now at an angle theta, what are all the accelerations? One thing we know is tangential acceleration like this, and one thing we know is centripetal acceleration inverse. So tangential acceleration will be given by, if this angle is theta, तो एंगल हमेशा ये याद रखना है, टेंजेंशियल व्हेन थीटा इज जीरो देयर वोंट बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली जी साइन अल्फा हो गया जी, बिकॉज दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, राइट. तो चलो ये सब छोड़ दो, पहले फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं, इससे बहुत क्लैरिटी आ जाए. देयर इज वन टेंशन इन दिस डायरेक्शन एंड mg in this direction. So then there are two parts. One is along this direction, one is perpendicular to this direction. There is only one force along this direction. This angle will be theta because it is normal na ऐसे. So this component, now if you draw the components of gravity, this will be mg sine theta in this direction and mg cos theta in this. Okay. So along the tangent direction, along tangent, we can say only one force is there. M into acceleration tangential will be equal to mg sine theta. Why? इससे एक simple सा answer हो गया. Acceleration tangent g sine theta. You can always use this inference somewhere, or you can maybe go for it anywhere. Like it doesn't matter. Like ये याद भी कर सकते हो, logically भी solve कर सकते हो. And next, total acceleration ना. Total acceleration के लिए acceleration centripetal will always be how much? V square by पुट कर दो वैल्यू इसका, which velocity v square तो ऑलरेडी पहले से आ गया था कि velocity is 2gl cos theta. V square will be equal to, फिर से स्टार्ट,
Just give me one moment, guys. Okay, one is case. सब मस्त है. I hope you like these videos. Pathfinder is also coming right away, guys. मतलब कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लेंगे. सोल्यूशन सब गायब हो गया. कोई चिंता की बात नहीं है, हम सॉल्व करेंगे. हम let's go for it solving this now. We already know the velocity, right? We have to draw it again. Sorry for the inconvenience, guys. पर थोड़ा कभी कभी इस टाइप का इश्यूज आते ही रहेंगे. So now at an angle theta, we know that the tangential acceleration is equal to g sine theta. By logic also you can say हमेशा theta 0 को imagine कर दो, automatically answer आ जाएगा कि like कैसा आएगा करके. And then there is centripetal acceleration in this direction equal to v square by r. In this case is L. And velocity is given by root 2gl cos theta. Right. तो इससे centripetal acceleration कितना हो गया? 2gl cos theta by L. देखा, wonderful solution, guys. Acceleration centripetal is 2g cos theta and acceleration tangential is g sin theta. Total acceleration will be root over ac square plus 8e square, which is equal to root over g sin theta whole square plus 2g cos theta whole square. क्या ये g कॉमन ले लो, over sin square theta plus 3 cos 4 cos square theta. One sin and one cos will get added. We end up getting root over 1 plus e cos square theta. The acceleration total, the function of theta. There you go, guys. दूसरा वाला और क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? One is acceleration as a function of theta. The next thing is the thread tension as a function of theta. Thread tension तो हो गया already ना. One thing, what is the tension we know? This is tension from free body diagram we will get. And this was mg cos theta. Right. The resulting acceleration centripetal was equal to v square by L. तो नेट फोर्स अब इसमें सिंपल सा सॉल्यूशन में हो जाए. टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलेरेशन सेंट्रिपिटल विच इज इक्वल टू 2mg cos थीटा. ओ एम जी, ये तो बहुत हो गया. ई जी टेंशन इज wonderful, guys. There you go. Simple solution for this wonderful problem. Next, the thread tension at moment when the vertical component of sphere's velocity is max. अच्छा. Vertical velocity component of the sphere is maximum. ये कैसे करेंगे? So this is one very important point we have to find out. We already got the tension, right? Tension is given by 3mg cos theta. तो ये थीटा को फाइंड आउट करने से हो जाएगा. What is the vertical component? The vertical component of the sphere's velocity. Vertical comp. ये तो बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ ना. This is a very good question for all those who enjoy solving this problem. यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? रूट 2gl cos थीटा हो गया था. इसमें वेलोसिटी भी ले लो. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी मतलब क्या है? This is 90 minus theta. So vertical component v vertical will be equal to v into sin theta at any given particular point. So अब substitute कर लेंगे इसमें, which is equal to how much? Root 2gl cos theta into sin theta. క్లాస్ లో చెప్పరా? క్లాస్ లో చెప్పు. ఫ్రీ ఉంటా. వెళ్దాం. నేను నేను 1 hour లో కాల్ చేస్తాను నీకు. 1 hour లో కాల్ చేస్తా. హాఫ్ అన్ అవర్ లో వీల్ ప్లాన్. వెళ్దాం, పక్కా వెళ్దాం. 2gl cos theta into sin theta is the value. यार बेसिकली दोस्त कॉल करके हम्पी चलने को बोल रहा है. आपको भी हम्पी जैसे मतलब मस्त ट्रैवलिंग करना है तो डेफिनेटली अभी थोड़ा फाइट मारो. इट्स ऑल यू रिक्वायर इज 2 months ऑफ सॉलिड प्रैक्टिस. उसके बाद क्रैक हो जाएगा. तो घूमना ही घूमना है. ठीक है. So we'll just simplify this further. We will get 2gl into cos theta into sin square theta.
अब ये होगी बात, when will this be maximum? This is maximum. ये maximum कब होगा? When cos theta into sin square theta should be max. This is the solution, guys. When will it be maximum? When this part is maximum, because the other three are constant, right? So cos theta into sin square theta should be maximum. ये mathematics का question हो गया. Cos theta into sin square theta is equal to maximum. So differentiate this with respect to theta. With respect to theta differentiate कर दो. तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ना. तो माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस cos थीटा इंटू 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0. हो गई बात, कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा. साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos स्क्वेयर थीटा. साइन थीटा एक बार गया तो इसमें क्या आ जाएगा? tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2, which means tan theta is equal to √2. So this is the value. तो sin theta कितना होगा इसमें? sin theta will be √2 by √3 and cos theta will be equal to 1 by √3. ये कैसे बोल दिया? सिंपल, ऊपर tan theta को ऊपर वाले को स्क्वायर कर दो, नीचे एक ऐड कर दो, बस. sin theta will be √2 by 3 and cos theta will be equal to 1 by √3. तो ये है दोनों का वैल्यूज. What is the tension at the moment? Tension will be equal to 3 mg cos theta है ना. तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, cos theta is 1 by √3 तो हो गया √3 mg. तो टेंशन when Vy is maximum is given by √3 mg. There you go guys, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया आपका. Now the angle theta between thread and vertical at the moment when the total acceleration of the sphere is directed horizontally. अच्छा. हाँ. तो एक बात, next third part is when acceleration is horizontal. कैसे होएगा horizontal? One thing we know is one centripetal acceleration, one tangential acceleration along the direction like this, along the tangent. ऐसा होगा. Acceleration tangential is equal to g sin theta, and then there is 2g cos theta in this particular direction. The resulting of these both, so this is along this direction. तो इससे बोल रहा है the resulting acceleration of both of them is coming out to be horizontal. The resultant of both of them is coming out to be horizontal. का मतलब क्या है? का मतलब the vertical components of both the accelerations, acceleration y of centripetal will be equal to acceleration y of tangential acceleration. तो ये दोनों को इक्वेट करने से हमें एंगल थीटा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी सेम. तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? दिस एंगल इज थीटा. सो acceleration y of centripetal acceleration will be equal to 2g cos theta into cos theta, which is 2g cos square theta. And acceleration y of tangential acceleration will be, ये tangential है, इसका vertical component ऐसा होगा तो ये 90 minus theta हो जाएगा. It will be equal to g sin square theta. दोनों equal है. तो अब यार फिर से same angle आ गया हमें. 2g cos square theta is equal to g sin square theta, which implies tan theta is equal to √2. So if you observe exactly at the instant when the velocity is maximum, that is when the vertical component is maximum. तो ये लॉजिकल नहीं हो गया. वन थिंग आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड वेरी एनालिटिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो द प्रीवियस स्टेटमेंट सेट पार्ट 2, व्हाट डिड इट से? दैट द vertical component of velocity is maximum. So what is the meaning of it? The meaning of vertical maximum means, it means that acceleration in y direction will be 0, which also implies that acceleration is horizontal. So without even solving it, you can actually analyze it, and even if you solve it, then you analyze it, you will get much good, very good clarity. ये है must solution, must epic representation of it. When will the vertical velocity be maximum? When the acceleration is 0 in the vertical direction. यही तो है, simple. All right, so ये हो गया wonderful solution for this question. Now for the next one, this is the last question of the Irodov section before we jump into a few questions of Pathfinder. Well, if you guys ask for more Pathfinder, definitely please let me know in the comment section, because I can do more Pathfinder questions than Irodov. But since I thought I should do more objective, subjective questions, I'm going for these tough questions which I enjoy solving.
So yes, definitely don't forget to hit the like button. What is the minimum acceleration in which bar A should be shifted horizontally to keep 1 and 2 stationary related to the bar? Minimum acceleration पूछ रहा है. देखो, generally there is friction between coefficient of friction which is equal to k between the surfaces. This surface has k and this surface has k2. K2 mount k2 नहीं है, k है. So one thing, so he's asking us to find the minimum acceleration of bar A. Acceleration of bar A. Since everything is sitting on bar A, I will start solving this question in the reference frame of bar A. So I will start solving in the reference frame of A. अब एक बार फ्री बॉडी डायग्राम खींचे तो मतलब पूरा समझ में आ जाएगा. You're sitting on this block, you're sitting inside this block. यहाँ पे एक कुर्सी लेके बैठ जाओ और एकदम ऐसे ऐसे देखते जाओ. There is one block here and then there is another block here. तो इसका मास, so both the bodies are equal, तो मास m and m ले लो. m1 है, ये 1 है, ये 2 है. खैर अलग लेने से और मजा आता, पर कोई नहीं, दोनों का मास m and m है. So when you're sitting in this block, he's asking us to find the acceleration of this block. So if you push it forward with acceleration a, so everywhere you have to apply the concept of pseudo force, क्योंकि ये inertial frame नहीं है. The a which is currently the block on which you're solving is not an inertial frame, which is non-inertial because it is accelerating. तो इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? सूडो फोर्स. ज्यादा टेंशन करने की बात नहीं है. सूडो फोर्स जब अप्लाई हो रहा है तो फोर्स एग्जैक्टली जो एक्सेलेरेशन है उसका उल्टा सब जगह फोर्स लगाते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम में मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे. और ब्लॉक M1 यहाँ पे है, वन ब्लॉक यहाँ पे है, इस पे सिंपली MA करके एक सूडो फोर्स डाल. दिस इज सूडो फोर्स. And then there is tension forward because this block wants to come down. But now imagine this situation. If there is nothing, if the body is not accelerating, block 2 will fall down, block 1 will go forward. Right? यही होने वाला है. Generally when there's everything is at rest, block 2 will come down, block 1 will go this way. So friction's original direction will be opposite direction. So friction on block 1 will act opposite direction like this. It will be equal to mu1. At the boundary condition पूछ रहा है, minimum पूछ रहा है, तो यहाँ पे boundary condition का friction डाल देते हैं. एक mg नीचे है, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर है, सो नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg. ये तो हमेशा हो गया. और वी कैन ऑल्सो से टेंशन विल बी इक्वल टू ma प्लस म्यू mg. omg, ये तो हो गया सिंपल. First value we got of tension is ma plus mu mg. Now for the second block, let's solve for the second block. इस second block में क्या क्या है? One thing we know for sure, pseudo force यहाँ पे ma पीछे है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? pseudo force हो गया. एक mg नीचे, एक टेंशन ऊपर, और एक, if because it's falling down, it's just stopping to fall down, friction will act up. तो यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर बॉडी टू. सिंपल सा इक्वेशन. बॉडी टू थोड़ा लंबा है बट सिंपल है. The MA because it's a pseudo force, and with respect to this everything is at rest, so we are taking all the solutions with respect to the block A and everything will be at rest, so everything is in equilibrium. That's why I am equating all the forces. And the up and down for A, ठीक है, एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी खींच लेता हूँ. एक MA in this direction, एक normal force in this direction, एक टेंशन ऊपर, एक म्यू एन ऊपर और एक mg नीचे. So we can also say mg will be equal to tension plus mu n. So mg can also be written as tension plus mu ma. This is the second equation, guys. The first equation क्या था? Tension is equal to ma plus mu mg. वही. हाँ. So the first equation was tension is equal to ma plus mu mg. This one we will equate both of them. We'll just substitute here. I will get mg is equal to ma plus mu mg plus mu ma. This is simple हो गया. What is the value? mg common ले लो into 1 minus mu is equal to ma common ले लो 1 plus mu. एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका.
Eventuality is a very simple one. G into 1 minus by 1 plus mu. There you go, guys. This is the solution. एकदम single simple से step में हो गया. That's it. So let's talk. So this is the end of the Irodov section for today. एक छोटा सा Pathfinder section भी डाला. So please let me know in the comment section, or please ping me, or while the class is happening or any time. Please make sure you ask me if you want more Pathfinder questions. Because I started Pathfinder because you guys asked, and if you want more, definitely ask for me in the comment section. Crack while you're asking for me in the comment section, crack IIT-JEE with India's largest platform, which is Unacademy for sure. Unacademy for sure. Use the subscription, get the plus subscription using the code NSS1, the magic code with which you will get 10% off additional discounts मिलेंगे इससे. To get the plus subscription using the code to accept to get unlimited benefits. Now, what do you get with plus subscription? You get daily live classes where you can chat with your educator, where you can have a chat with your educator, engage in discussions, ask your doubts, and answer all polls, all while the class is going on. बहुत मजा आता है सेशन में. In live classes you can send in your doubts, you can send photos, and dynamically पूरा class बैठ के discuss कर सकते. So it's pretty awesome. I cannot tell you how awesome it is. You also get live tests and quizzes. One of them is the night out with Srikanth sir, which I conduct, where we have a lot of fun generally. All right. You evaluate your preparation with regular mock tests and quizzes and get detailed analysis on your performance. Not only that, you get structured course where generally when you miss a class na in college, in school, तब नेक्स्ट डे आओगे ना तो पूरा माइंड ब्लॉक हो जाता है. बट हियर you have structured course, step by step milta hai, taki you cannot miss a single class also. Even if you miss it, you can just open your pocket dictionary, pocket library, or whatever you can call it, pocket universe, and you can crack IIT-JEE at your own comfort. You get unlimited access to teachers from all the country, from the across the entire country, some best teachers from south, the best teachers in the north, to me, to many other awesome teachers around. You'll find all of us at Unacademy. So definitely take the plus subscription using the code NSS1. What are you waiting for, guys? Go for it. So the cost of this is 38,500 for 1 year. But if you use the code NSS1, as I already told you, you'll get 10% off, and the cost will come down to 34,650. This is for all of you guys. You can actually, this is mostly for guys who want to crack 2022 also. 2021 वाले भी ले सकते हैं. 6 months का कोर्स है ये. 28K का है. If you use the code NSS1, you get it for 25.2K. ठीक है. तो 25,000 में इस साल का जेई का एक क्रैश कोर्स टाइप मस्त वाला मिल जाएगा आप लोगों को. डोंट मिस दिस चांस. द कॉस्ट ऑफ दिस माइट लुक लिटिल बिग ना, मतलब थोड़ा 34,000 मतलब छोटी बात नहीं है. But if you break it down to daily, which is what you need to do, IIT-JEE की preparation is not about how many you do, how many hours you work. It's about हर दिन काम करना है. And if you are doing that with Unacademy, the cost comes down to 32 rupees per day on physics, chemistry and math. मतलब एक एक सब्जेक्ट का अगर तुम हर दिन पढ़ोगे तो the cost of this comes down to 32 rupees, which is pretty cheap. मतलब कोई ट्यूशन नहीं मिलेगा तुझे इतने प्राइस में, कोई ट्यूशन भी नहीं मिल सकता. So that's the beauty of it. And not only that, if you want to crack IIT-JEE in 2022 or even 2023, जो जल्दी स्टार्ट करने वाले हो, you can take the 2 year course and it's much cheaper. 56,000 में है. After using the code, you get it for 50K यार. मतलब 50,000 में 2 साल का ट्रेनिंग चल रहा है. Awesome, right? So you have to go for this. This comes down to 23 rupees per day. मतलब अब बताओ. If you're studying every day and you're paying 23 rupees to learn physics, 23 rupees to learn chemistry, and 23 rupees to learn maths. Like, I can't say anything better than this, guys. So definitely go for this plus subscription. And this Unacademy has also launched iconic subscription for you guys who need little help from teachers, guidance के लिए. Not that यहाँ नहीं मिलेगा, but it will be dedicated teacher assigned to you to help you with your performance. That is a personal coach who will give you one-on-one guidance from the top exam expert. He will guide you and align your preparation strategy. He won't answer you, but he will guide you. He will only be proactive in helping you कि यार तुम ये सब्जेक्ट अच्छे नहीं कर रहे हो, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डाल दो, ये टाइम टेबल बना दिया मैं तेरे लिए, ये टाइम टेबल फॉलो करो, क्रैक करोगे. So this way, used based on the test analysis, a study planner will be given to you, and this personal coach will help you
to make sure everything is in sync and you study and crack IIT-JEE with peaceful mental state of mind. टेंशन नहीं है कि यार कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब की टेंशन नहीं है. The coach will take care of you. Not only this, you also get all the benefits of plus along with the personal coach. The cost of this is 65,000, but if you use the code NSS1, NSS1 is the code, you get a 10% off again, you get it for 58,000. And for 2 years, those who want to crack JEE 2022, इसमें 10,000 का डिस्काउंट है. तो 10,000 का डिस्काउंट मिलने वाला है by using the code NSS. Pretty awesome, and I want you guys to go for it. It comes down to 90,000 rupees for 2 years. So, especially in this time of quarantine, and you know, the first vaccine is finally out. एक वैक्सीन यूके में हुआ, एक वैक्सीन यूएस में हुआ. अब हमारे लिए आने के लिए कितना टाइम लगेगा, स्पेशली तुम बच्चों. एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैक्सीन्स which are currently coming out cannot be given to students or kids under the age of 16 years. तो मतलब तुम लोग अभी ये वैक्सीन यूज भी नहीं कर सकते हो. सो दिस सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर यू गाइस. आई वांट यू गाइस टू स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड क्रैक IIT-JEE with Unacademy, and you can use the code NSS1 and get awesome discounts. All right. Hello. Now for the Pathfinder, on public request, on popular request from you guys, I finally started solving Pathfinder problems. I've collected a few 5-6 problems here. We'll keep going forward. ठीक है. We'll keep solving more and more based on your request here. जैसे कि आयुध क्रोथे ने पहले मुझे पूछ लिया, तो आई स्टार्टेड पुटिंग दिस पाथफाइंडर प्रॉब्लम्स नाउ. So more of you, if any request you have or any doubt you have, you can just feel free to put the comment below. But don't forget to like it. Comment तो जरूर करना, but like तो मत भूलना. Share भी मत भूलना. Share it everywhere. Comment everywhere. And anything you, any suggestion you'd like to give or anything you want to learn extra, like problem solving, I would like to focus mostly on problem solving for the next 60 days, because अब 60 days में theory से कुछ नहीं होने वाला है. I want all of you guys to work on problem solving, and I am there with you guys to help you guys solve problems the entire time. ठीक है, don't worry, I will be there with you. Problem solve करूँगा. Any type of problems you have, specific problem about, definitely put it in the comment section. I will read and solve them in the next correspondingly next class. All right. So now let's go to Pathfinder question. ये मस्त, ये देखते ही मुझे बहुत दिल खुश हो. A pair of scissors is used to cut a wire of cross section held vertically. To reduce the required force, the wire must be placed close to the hinge. मतलब हाँ, ऐसे पूरा ब्लंट फोर्स से बेटर है थोड़ा एंगल में. बट इफ इट्स प्लेस टू क्लोज इट स्लाइड्स अवे, ऑफ कोर्स, बिकॉज क्योंकि पूरा जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स ही देगा. It slides away until the angle between the blades become theta. At theta, the wire will get cut. So he's asking us to find the coefficient of friction between the blades and the wire. चलो solve करते हैं इसको. This angle, let's draw the free body diagram first. Free body diagram से पूरा क्वेश्चन का क्लैरिटी आ जाएगा. यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा ही दिया है. यहाँ पे θ/2 है, यहाँ पे θ/2. तो इफ यू टेक अ सर्कल लाइक दिस, टच बोथ ऑफ देम ना. थोड़ा गंदा सर्कल बना दिया, गंदी बात, कोई जल्दी कोई टेंशन नहीं है. बट आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, सो दिस इज द बेस्ट आई कुड. तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसा होगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसा होगा और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसा होगा. And then, since the two normal forces together will push the body to the left, if you observe the net force is acting this way. So what will friction act? How will friction act now? Friction will start acting in this particular direction. दोनों साइड फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगा और दोनों साइड नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट. So if you see the net force acting on the body, the net force, now if you draw the net force एकदम free body diagram खींच के, there will be two normal forces like this. ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स ऐसा है, एक नॉर्मल फोर्स ऐसा है. दोनों का वर्टिकल से एंगल कितना होगा, ये θ/2 है यार. चलो, और ये दोनों को एक जगह पे ज्वाइन कर दूंगा. ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स को ऊपर कर दूंगा, ये नॉर्मल फोर्स को नीचे कर रहे हैं ना. एक्सक्यूज मी. ठीक है, with the vertical, what is the angle they are making? If you observe,
दिस एंगल इज थीटा बाई टू। तो वर्टिकल से ये एंगल भी थीटा बाई टू हो जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा बाई टू। इस जो थोड़ा मतलब अच्छा दिख गया, तो ये एंगल भी थीटा बाई टू। तो effective net resultant force due to these both resultant force of normal reaction will be equal to, तो सिंपल इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 90 माइनस थीटा बाई टू 90 माइनस थीटा बाई टू होगा, तो दोनों का कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, यू विल गेट 2n sin थीटा बाई टू। ऑलराइट, मजा आ गया। चलो अब फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक ऐसा है दोनों का हॉरिजॉन्टल सा एंगल थीटा बाई टू है। तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो ये कितना हो गया, 2f। फ्रिक्शन स्मॉल f कर लेते हैं, f and f। So what is the total resultant? You'll get 2f cos theta by 2. And what is the relation between f and n? F is equal to mu into n for the boundary condition. Boundary. For the net force to be 0, we can simply directly solve from both of them, from analyzing both of them. From the diagram, में क्या आ जाएगा? That 2n sin theta by 2 will be equal to 2 into f cos theta by 2, which can also now be written as 2 mu n into cos theta by 2. वाओ, एन एन कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, म्यू। तो इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पहले हम कैंसिल करें। टू टू आर गेटिंग कैंसिल्ड, एन एन इज गेटिंग कैंसिल्ड। तो व्हाट एम आई गेटिंग, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा बाई टू, विच इज इक्वल टू tan 0.5। देयर यू गो गाइस, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन, सिंगल पेज में सिंगल डायग्राम से सॉल्व हो गया फटाक। इफ यू लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस एवरीवेयर गाइस। ऑसम सेशन गोइंग ऑन। यो, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अबाउट प्लेइंग, इट्स अबाउट प्लेइंग, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मतलब ये देखते में प्यार में पड़ में पडिपोयन है, तो चलिया प्यार में ही पडिपोयन है। तो इसमें फोर्स है, a block of mass 1 kg is given initial velocity of 20 meters per second by a sharp hit, मतलब कोई मार के 20 meters per second speed दे दिया, on a horizontal floor lubricated with oil, the block moves in a straight line and stops due to viscous drag force on the oil film. So viscous force is generally proportional to minus velocity if you observe, मतलब जनरल विस्कस फोर्स का। या अगर ये समझ में नहीं आए तो ये ग्राफ देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू माइनस वेलोसिटी माइनस v। Here also, as velocity is becoming zero, force is becoming zero. So this, by seeing the graph, by graph or by viscosity logic, either one of them will lead you to the same inference. Force is proportional to minus v. So I'll directly write force is equal to minus. How force drags? Okay, as shown in the figure from 14 say it is given here at 14 meters something. Some I don't know what the values are here. ये देखने में तो डबल लग रहा है, बट वी नॉट श्योर नो ये वैल्यूज। इफ यू सी दिस, if each unit if you count as one and all, you cannot solve here both. Don't get into the pango of understanding this. So let's how the force varies with black is shown in the figure. However, the experiment forgot to label the coordinates exactly, ये labeling का issue दिख रहा है इसमें clearly. So he's saying the block was moving with 8 meters per second, it slides 20 meters and stops. The from 8 to 0 meters per second, displacement is 20 meters. अब इन दोनों का रिलेशन अगर हम कैलकुलेट फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा कहाँ, है ना, सिंपल है। तो हाउ फार डज द ब्लॉक स्लाइड फ्रॉम बिगिनिंग टू द इंस्टेंट इट स्टॉप स्लाइडिंग, मतलब टोटल इनिशियल से फाइनल तक पूछ। तो इसके लिए देयर इज वन वेरी सिंपल ट्रिक यार, मतलब एक सिंपल ट्रिक से हम पूरा सॉल्व कर सकते। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हिच आई विल राइट एज m into v dv by dx इज इक्वल टू माइनस के वी। एकदम देखा इससे, मतलब वन स्टेप ओवर फसक। दिस काइंड ऑफ स्टेप्स आर व्हाट यू शुड बी एमिंग एट, क्योंकि यू नो एक्सेलरेशन को वी डीवी बाई डी एक्स में लिख सकते हो आराम। तो इससे हमें क्या आ जाएगा, m इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के। तो इससे क्या आ जाएगा, m dv इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, बिकॉज एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, यू विल गेट m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स।
तो ये डेल्टा एक्स अब दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा वी -8 है और डिस्टेंस 20 मीटर से सब्स्टिट्यूट करो, मास 1 है, तो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज विल गेट 1 into 8 इज इक्वल टू k into 20। तो k का वैल्यू हो गया 8/20 विच इज इक्वल टू 0.4। वंडरफुल। अब सेम इक्वेशन को दोबारा यूज करेंगे तो आंसर हो गया। वी नो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 meters per second and we also know k is 0.4। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, मास इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी बाई के। माइनस भी लिख सकते हैं और मॉड ऑफ दिस भी लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा वी इज 20 0.4 इक्वल टू 50 meters। एकदम सिंगल स्टेप में कर दिए रे। एक्चुअली दिस द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज वी सॉल्व एवरीथिंग इन अ सिंगल स्टेप। One step to rule them all, one step to guide them, and in darkness bind them. That's it. Awesome. तो ये हो गया दूसरा solution. Now for the third question. Yeah, this one is a very wonderful question because I like the way constant relation works. This constant relation has and generally अब इसको अगर देखोगे तो क्या लगेगा, तो फोर्स तो राइट साइड है, तो दोनों ब्लॉक्स राइट मूव करेंगे, ऐसे ही लगेगा ना। बट इफ यू एक्चुअली ऑब्जर्व दिस डायग्राम यू विल ऑब्जर्व सम वंडरफुल थिंग्स। तो बस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड मतलब जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ पे टेंशन एफ है, तो अक्रॉस द एंटायर स्ट्रिंग इट विल बी एफ। यहाँ पे भी एफ होगा, यहाँ पे भी एफ होगा, और यहाँ पे पीछे एफ होगा, यहाँ पे पीछे एफ होगा। इफ यू ड्रॉ दिस अगेन केयरफुली, इफ यू ऑब्जर्व से करके है, का मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन पीछे है। इफ यू ऑब्जर्व, वेरी नाइस क्वेश्चन। लाइक दिस शुड हैव बीन लिटिल मोर टफर देन दिस, बट देन इट्स ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस है एक बार फिर से। यहाँ पे एफ है, पे एफ, यहाँ पे 2F है बेसिक। तो इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द 3M ब्लॉक, व्हाट इज द टोटल फोर्स यू आर गेटिंग, F। एंड ऑफ द 2M ब्लॉक, वाह यार एकदम मतलब मजा ही आ गया इसमें, मजा ही कुछ और है। यहाँ पे 2F है, तो 2M ब्लॉक का इस साइड एक्सेलरेशन 2F। So acceleration of block 3M will be A in the forward direction and acceleration of the 2M block will be equal to A in the backward direction. तो दोनों एकदम compress हो रहे, आसपास में आ रहा है। So what will happen to these both strings? So I'll call this string total एकदम. He's asking me to find the acceleration of this point. I'll call this acceleration 1. I will call this string acceleration 2. I will call the lower string acceleration 3. And since everything is connected together, what can I say? A1 plus A2 plus A3 will be equal to 0 because of string constraint. इस साइड ये ले लो, इस साइड ये ले लो, जो भी है, the length of string should remain same. ठीक है, the rate of change of length of strings when added should become 0. Rate of change in length of strings, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, इसको पार्ट 1 बोल दूंगा, इसको पार्ट 2 बोलूंगा, इसको पार्ट 3 बोलूंगा। Rate of change of acceleration of part 1 plus acceleration of part 2 plus acceleration of part 3 is, this is nothing but rate of change of lengths. Rate of change of, अब A2 and A3 दोनों साइड, इस साइड का एक्सेलरेशन क्या था, जैसे कि हम अभी सॉल्व किए, दिस साइड हैज एक्सेलरेशन A, दिस साइड हैज एक्सेलरेशन A, so A2 will be equal to A3 will be, both of them will have, length is reducing by 2A, right? So I will directly write both of them are having acceleration of 2A, where all of them A is given by F by M। ठीक है, ये पहले हम रख लेते हैं। तो -2 है, तो इसका वैल्यू A1 कितना हो जाएगा, A1 वैल्यू विल बी इक्वल टू 4A। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, so the string is increasing at the rate of 4A and the block 3M is moving forward with A. So what is the acceleration of point of application? Acceleration of 3M mass plus acceleration of thread, which is equal to A plus 4A, which is equal to 5A. So the acceleration of this block will be 5A. Acceleration of point will be equal to 5A, which is equal to 5F by N. Nice. That is D. Right in front of you D तो है,
If you like this, don't forget यार, मत जरूर मत भूलना to like, share and subscribe. Okay, ये last question, मतलब last नहीं, कोई एक और question है. Let's solve this question now. A large parking place has uniform slope theta. A large parking space has uniform slope theta with the horizontal. A driver wishes to drive his car in a circle with constant speed. ये point बहुत important है. He is going with constant speed in a circle of radius r. इस circle का radius कितना है? ये circle का radius r है. Right, wonderful. The coefficient of static friction between the ground and this is mu. Okay, what is the greatest speed can the driver achieve without slipping? Okay. When is the net force? So देख, एक बात यहाँ पे याद रखना है कि only friction and gravity cause circular motion because there is no other external force which is making it move. So only friction and gravity will make circular motion. And when will the sum of both of them be minimum? Both. So one thing, it has to act towards the center, which means, and always it should be towards center. तो एकदम logically अगर देखोगे तो in this particular whatever angle this is, the acceleration will always be towards the center. ऐसे ऐसे करके. In all these cases except at the bottom पे g value mg, the पूरा g, at the bottom gravity will always try to make it fall down. At bottom gravity is opposing circular motion na, ekdam it's trying to come push it down, circular motion. So at this instant, at bottom only the max acceleration will be minimum, centripetal acceleration. So if you find this, we'll get the answer. What is the acceleration centripetal at the bottom? So if you observe at the bottom, कौन से forces रहेगा? एक रहेगा mg into sin theta always, और एक upward रहेगा mu mg into cos theta. Now one thing we have to condition is that mu mg cos theta should be greater than, the condition for circular motion is that mu mg cos theta should be greater than mg sin theta. Otherwise, the body will definitely slip down at the bottom. It is not possible. So, ये है condition. And then we can say at bottom, V square by R will be equal to the net force, which is equal to mu mg mv square by R लिखते थे, equal to mu mg cos theta minus mg. इससे क्या आ जाए? mm सब cancel, velocity will be equal to root of gr common ले लो into mu cos theta minus, देखा एकदम, मतलब एकदम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के बाद द सॉल्यूशन बिकम्स मच मोर इजियर. आई होप यू लाइक इट. लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये करना है कि बॉटम पे, at bottom the opposing force, the force g is opposing circular motion, so it will have the least effect. So at the bottom the acceleration centripetal will be minimum, because when g and friction act together then the acceleration will be more, but if g and friction are opposing each other then it will be minimum. And also the condition will be that mu mg cos theta should be greater than mg sin theta. तो ये सब अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबाना मत भूलना गाइस. And we will have the solutions every day, so definitely subscribe to this channel and we will have awesome fun. Now this is one question which is very nice, relative velocity का concept से बहुत useful है. It's a multiple choice question. This is a, we are finishing it using a multiple choice question situation. So horizontal conveyor belt is running with constant velocity in the horizontal direction, एकदम ऐसे जा रहा है. A small disk enters a belt horizontally with V naught. ऐसे जा रहा है, कोई करके आया, ऐसा ये जा रहा है. So something when it's going like this, someone just hit something horizontally. Now what will happen after something? This will also start moving to the side, है ना? So if you observe carefully, initially what will friction do? Friction will oppose relative motion. It will oppose relative motion. This is the main concept here. I want you guys to understand that friction will oppose relative motion. कुछ नहीं है, it will oppose जो भी relative velocity है वो oppose करेगा. So now we have to understand velocity of the disk
with respect to belt. So friction will oppose velocity of disk with respect to belt. It will oppose velocity of disk with respect to belt, not with respect to ground. ये ground के हिसाब से oppose नहीं करेगा, ये with respect to disk ही oppose करेगा, with respect to belt, because belt is only giving friction, no? Belt is only giving friction, so it will give this one. तो अब initially velocity of the particle, तो velocity of disk with respect to belt देखते हैं. Velocity of belt ऐसा है और velocity of disk ऐसा है. So velocity of disk with respect to belt will be velocity of disk minus velocity of belt. So velocity of this will be equal to relative velocity का concept है, velocity of disk minus velocity of belt. ये जो कितना हो जाएगा अब इसके लिए थोड़ा फ्री बॉडी है, अब इसके लिए थोड़ा ड्रॉ करेंगे. Velocity of disk is upwards like this 4 meters per second जो भी है, and velocity of belt का माइनस मतलब ये opposite डायरेक्शन में 3 है. तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, इफ यू ऑब्जर्व दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू बी. अब सीधा आ गया हमें, विल बी इक्वल टू 4j कैप माइनस, अब इसी डायग्राम को थोड़ा ऐसे ही कर लेंगे, 4j कैप माइनस 3i कैप which is equal to 5 meters per second, and the direction of friction also will be in this direction. This is opposite of this is direction of friction. Direction of friction will be along 3i cap minus 4j cap direction. It is just exactly opposite to this. 3i cap minus 4j cap नहीं, 3j cap minus 4i. ये डायरेक्शन है तो इसका एग्जैक्टली उल्टा है यार, ये डायरेक्शन जो भी है. हाँ सही ही लिखा मैंने, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज वी रिलेटिव, तो इट विल बी, हाँ करेक्ट, 3i cap माइनस वॉट एवर डायरेक्शन दिस हैज. तो बाईफाई करने से यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो ये डायरेक्शन में है करके बोल सकते हैं. what all do we know velocity of the disk. So now with respect to the now predict the path of the disk. अब path of the disk कैसा हो with respect to the, अगर हम with respect to the belt जाएंगे, we are solving with respect to the belt, velocity is this way, friction is opposing, so it will move in a straight line. With respect to belt it moves in a straight line, है ना, because with respect to belt only one whatever relative velocity is, friction is opposing that, so straight line related to the belt is correct. And with respect to the ground क्या हो जाएगा, with respect to ground क्या हो जाएगा, velocity तो एकदम ऊपर है और friction तो इस डायरेक्शन में है, तो velocity with respect to ground, and ये friction का डायरेक्शन ऐसा है, तो मतलब there is one component in this direction, one component downward, तो ये एकदम एक्सेलरेट करते हुए ऐसे करके कुछ पैराबोला की डायरेक्शन में जाए. There you go guys, I hope it's clear. ठीक है. Now for the second part of it, what should be the minimum width of the belt so that the disc always remains on the belt. एकदम सिंपल, इसका फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में, और इसका और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन वी विल गेट इट इज अराउंड -4j, नो, -4j कैप, एंड इसका डायरेक्शन 3i कैप डायरेक्शन है. एक बार फ्रिक्शन का टोटल वैल्यू देख लेते हैं. फ्रिक्शन का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन विल जनरली बी इक्वल टू हाउ मच म्यू जी ना, तो इसमें कितना हो गया 0.5 इंटू 10, तो 5 हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन. तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सो द फ्रिक्शन एक्सेलरेशन विल डायरेक्टली बी इक्वल टू 3i cap minus 4j cap डायरेक्टली, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज ऑलरेडी 5, फेज ऑलरेडी 5. तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन -4 है, और इसका अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक और कलर में ड्रॉ करेंगे, the velocity is 4 meters per second in the upward direction. So the time for it to stop, time of stopping is 1 second. And what is the distance traveled? ut plus half at square, और simply 2 meters हो जाएगा, क्यों, 4 into 1 minus half into 4 into 1 square is 2 meters. There you go, simple 2.0 is the right answer. Now for the last question of the day guys,
Not only this, I have a special surprise for you guys today. एक छोटा सा surprise है. A horizontal conveyor belt is running at constant speed of VB is the something. Okay, the same question. What is the minimum speed of the disk relative to the ground? अब ये question बहुत important. तो V नॉट कितना है with respect to ground? 4 I cap, 4 J cap था ना ये? हाँ, 4 J cap लिखा हुआ है. And what is the acceleration of the disk with respect to ground will be equal to, अब already clear किए थे ना, 3 I cap minus 4 J. तो velocity at any particular point, तो V नॉट हो गया, V नॉट. V at any particular time will be equal to V नॉट U plus AT ना, तो यही लॉजिक यूज करेंगे, which is equal to 4 J cap plus 3 I cap minus 4 J cap into T. And we know one thing, T is less than 1 because T is equal to 1, the body stops. That is what we already derived. ठीक है, तो इससे हम ये आ जाएगा, तो व्हाट विल गेट 4 minus 4 T J cap plus 3 T I cap. दिस इज द वेलोसिटी. तो इसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी वेक्टर है, अब स्पीड में कन्वर्ट करना है, तो स्पीड विल बी, स्पीड वेक्टर mod ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू रूट ओवर 4 minus 4t होल स्क्वायर प्लस 3t होल. तो ये हो गया 16 प्लस 16t स्क्वायर minus 32t plus 9t square. दिस शुड बी मिनिमम. इसका मिनिमम का कंडीशन क्या है, तो एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा हमें, वी विल गेट रूट ओवर 16 प्लस 25t स्क्वायर माइनस 32t should be minimum. Differentiation with respect to time I will differentiate. What will I get? 50t minus 32 is equal to 0. So time सीधा आ गया 32 by 50 seconds, which is also 16 by 25. तो सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, वापस क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग we will get root over 16 plus 25 into 16 square, which is 16 into 16 by 25 and 20 minus 32 into 16 by 25. तो थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, बट आराम से हो जाएगा एक बार, जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज विल गेट. एक 25 चला गया, ये यू गेट 256 by 25 माइनस 32 into 16 मतलब 5 on 12 by 25. देखा, सिंपल हो गया. तो ये होल थिंग बिकम्स 400 by 25. सब बात 25 कर दो डिनोमिनेटर में. 400 प्लस 256 माइनस मतलब माइनस 256. वाओ मैन, एकदम 144. इतना प्यारा सा वैल्यू, 12 by 5, 2.4 मीटर. ऑसम यार, दिस इज ऑसम सॉस. कुछ नहीं किया मैं, आई जस्ट कन्वर्टेड एवरीथिंग इनटू फ्रैक्शन एंड गॉट द आंसर. There you go. This is the last question, guys. That's all for today. Adios, amigos. Actually, एक सरप्राइज प्लान किया था, बट वो ऐड नहीं हुआ लास्ट में. तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू मेक डू विद दिस. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ये लाइक बटन दबा लेना. NS1 कोड को मत भूलना. डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एवरीवेयर एंड हिट द कमेंट सेक्शन and hit the bell icon, guys. This is Let's Crack JEE channel for you guys to crack JEE in a more effective way, and I am giving you a special course where I am going to solve all tough problems which you ask or don't ask, which I find good, so that you can approach the exam with a much more clearer approach for tough problems. All right, so that's all for today. See you guys until next time. Adios, amigos. Take care and have fun.